Good morning, everyone. This is Rahul Kumar Dixit. So today we are going to discuss about the generics in Java. Why generics are required. So we are directly dive into our topic generics and understand about the problem statement. Let us assume we have a one class which holds any data. Let's say there is a class manipulation, and that class is having one data into X or into Y, and that data is just setting those values. This what this class is doing, setting the values of these X and getting the value of it. That's it. These two operations is simply performed. The class is just going to hold that and not going to manipulate. So let us take as an example to our IDE. So here we already created an integer type class. Please look into that. What is that? This class is of type integer and it is created in this class. We are creating two integer type variables, and this class is consisting two constructors. One is no argument constructor, another one is a parameterized constructor. Getter for the first variable and getter setter for the first variable, getter for the second variable and getter for the last variable, second variable, and two string. It's just holding the value. So if I want to set the value, what we have to do? I am created one method which is getting that value, get first, or I'm directly use m here, or m dot get first and sys out m dot get second. And if I'm going to execute this code, what happened? First value is 22 set by us. It is printing 22. See, at the time of creation of the object, the first argument is passed as 22 and the second argument passed as 33. So if I'm getting the first value, the 22 is printed. If I'm going to getting the second value, the 33 is. But let us assume this class is meant for the holding the data of integer type only. But what if we require to hold the data and get the value of float type? Then we must have to go through our code. Either we have to change the code of this class or we have to create some new class with the manipulate float name. And डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हमने एक नई क्लास बनाई इन विच जहां जहां इंटीजर लिखा हुआ था उस क्लास में हमने वहां वहां फ्लोट को लिखा और नाउ if I'm going to execute it also it is executed fine. So how it is created? Manipulate float m is equal to new manipulate float and I am passing some values here 22.0f comma 12.0f. And if I am going to getting those values, what happens? Check it out. And because of this is an m1 variable, so it is executed like that. And what is the expected output? 22.0 and 12.0. Please check it out.
What if I want to hold a string values? What if I want to hold the any future class, there's a circle, I want to create circle and I want to hold that value. So for that, we have to make again and again the same piece of code changing the data type. इससे क्या होगा? इससे हमारी कोड की जो लेंथ है वो बढ़ती है, कोड हमारा रीडेबल नहीं है। तो मुझको क्या, तो यहां पर जेनेरिक्स का कॉन्सेप्ट पिक्चर, जेनेरिक्स हम सिर्फ एक क्लास बनाएंगे और वो किसी भी तरीके के डेटा पे काम करें, किसी भी तरीके के डेटा को होल्ड करें। हम इसी तरीके का एक एग्जांपल देखते हैं। So now, how to define a generic class first? At the time of declaration or creation of the class, what we are doing? We are creating the t variable, the template, or you can say anything. In the angular bracket, you have to define the value. You can write anything here. Simply, there is no meaning. लेकिन जो आप यहां लिखेंगे उस तरीके के सारे वेरिएबल्स पर टी लिखा है यहां पर, तो मैंने देखिए टी टाइप का फर्स्ट बनाया, टी टाइप का सेकेंड बनाया, और जहां जहां पर हमने इंटीजर यूज किया था, वेर एवर वी आर यूजिंग द इंटीजर, वी कैन यूज दिस टी एज ए पैरामीटर, एज ए डेटा टाइप at the time of returning, at the time of variable passing and तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? अब हम जब इस मैनिपुलेशन नाम की ऑब्जेक्ट का क्लास बनाएंगे, लेट मी डिलीट ऑल दीज थिंग्स, what we have to do? We have to use manipulation, and at the time of creation of object now, मुझे ये बताना पड़ेगा ये जो आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं ये किस तरीके के डेटा पे काम कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, हम इंटीजर टाइप के डेटा पे काम करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये इंटीजर टाइप के डेटा पे काम करेगा। लेट्स से m2 is equal to new manipulations। अगर जो ओल्डर वर्जन ऑफ जावा का होता तो हमें यहाँ भी इंटीजर लिखना पड़ता, लेकिन अब ऐसा लिखने की जरूरत बार बार नहीं है, जस्ट लीव इट एज इट इज। आई एम पासिंग टू वैल्यूज हियर, लेट्स से 22 222 comma 333, that's it। And if I'm writing the same code here, sys out m2 dot get first and sys out m2 dot get second, what happened? What is the expected output? 222 and 333. So see, it is the output. If I want to pass some string type data, it is working on that as well. See, sorry. So we have to define the type at the time of creation of the object, at the time of creation of the object, get your goal. Rest, I'm not changing anything. तो हमारी एक ही क्लास अलग अलग तरीके के डेटा पे वर्क कर रही है, जो इंटीजर टाइप के डेटा पे भी काम करेगी और स्ट्रिंग टाइप के डेटा पे। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन नाउ? The restriction at the time of creation of the object, you have to tell the compiler this object is meant for integer, this object is meant for string, like as it is at line number 6. We are creating a manipulation object by telling the compiler
दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप इंटीजर, ये इंटीजर टाइप के डेटा पे काम करें। At the time of line number 10, we are declaring the very object of the same type. This object is treated as a string. तो एक बार हम मैनिपुलेशन नाम की क्लास को फिर से देखते हैं कैसे बनाया हमने। ये मैनिपुलेशन क्लास है जो जेनेरिक टाइप की है। हमने टी टाइप का फर्स्ट बनाया, हमने टी टाइप का सेकेंड बनाया, हमने मैनिपुलेशन जहां जहां भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं वहां वहां हमने टी लिख दिया। बट वी आर राइटिंग टी टाइप का फर्स्ट, टी टाइप का सेकेंड, एट द टाइम इन द सेटर्स, in the getters it is returning the value, and there is also mentioned the t type. So what is that? What is the restriction? Now the thing is like that. देखते हैं क्या है, थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझते हैं इस बात को। तो ये हमारी एक क्लास है मैनिपुलेशन, दिस इज अवर क्लास मैनिपुलेशन। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक मैनिपुलेशन नाम की क्लास बना रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तभी हम ये बता रहे हैं कि ये क्लास, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये मैनिपुलेशन का इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही कोड कंपाइल होगा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट में ये जो फर्स्ट है ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा, ये जो सेकंड है जहां जहां भी टी लिखा हुआ है वहां वहां इंटीजर की तरह वो उसको ट्रीट करेगा कंपाइल। और इसका नाम इट इज ए वन गेट फर्स्ट, वन गेट सेकेंड। हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो जहां जहां पे टी लिखा हुआ है वहां पर स्ट्रिंग लिख जाएगा, स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट। और इसका नाम क्या है? जब हम जेनेरिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये भी सीखते हैं कि जेनेरिक एक टाइप सेफ्टी फीचर देता है। तो व्हाट इज टाइप सेफ्टी एक्चुअली, देखते हैं। हमने ये ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का बनाया और ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का बनाया। चलिए एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं जो कि फ्लोट टाइप का है। केवल रेफरेंस वेरिएबल बना है और इस एफ में मैं M2 के ऑब्जेक्ट को डाला। देखो, तो what I am trying, manipulation M2, this M2 reference variable is also of type same manipulation type class. This M3 is also a manipulation type reference variable, and this F is also a manipulation type. But still, if we are assigning the M2 reference to F, it's giving an error. What that error is, please look into that. What that error is, please look into that. Type mismatch cannot convert from manipulation integer to manipulation float. इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो M2 है ये इंटीजर टाइप के मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्ट है, और जो F आप जिसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, वो मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो फ्लोट टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। तो दैट इज द फीचर ऑफ टाइप। अगर जो फीचर नहीं होगा तो रन टाइम पर एक्सेप्शन आने की चांसेस, मैं आपको देता हूं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। देयर मे बी a value can be holded if we are not defining any integer type over here,
it can assigning those values and it can easily execute it. I'm commenting out this f. And if I'm going to execute it, again the values are printed. There is no matter. Now this M2 can hold any kind of data. It is of object type. आप 22 पास करो 33 पास करो ना, there is no matter. But अब यहाँ पर क्या हुआ, F में M2 को हम असाइन, is it clear? Then check it out. So I know that F is containing, because the variable of F is created of type float, and if F is holding something, I'm very much sure, oh, F is holding the float value. So if I want to get that value and hold some integer variable, so what I have to write? I can write like this. Float F is equal to F dot get, sorry, F1, F dot get first. What that happened? Manipulate, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या. अब मैंने क्या किया, ये जो इंटीजर है इसको यहां से हटा दिया. जैसे ही इंटीजर को यहां से हटाया, हमने कोई भी टाइप एज अ टाइप ऑफ क्रिएशन नहीं बताया, ये ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू को होल्ड करता है. एन ऑब्जेक्ट इज अ पैरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, and if I am passing some value here, because it is a type integer and integer is also a child class of object, it can easily pass. And if I am getting those values, let's say like that, m1 dot get first, it can easily get those values. But what I am doing here, I am creating a manipulation float f, and in that f I am assigning that m1, which are type object type. It can, there is no error, no compile time error. And if I'm pretty much sure that this f is holding the value, if I'm getting that f dot get first, and I'm assigning that value into some float variable, it can be होना चाहिए, hold होना चाहिए ना. देखते हैं क्या होता है. If I'm going to execute it, please check it out. What it is saying, that this is a class cast exception. Please look into that, because actually what happened here, this m, this m1 is holding an integer type value. And if I'm calling and the same reference I am giving to f, and this first is holding, this first is holding 22 and this is holding 333. And if I'm getting the same reference in this line, the same reference is first here. M1 is pointing to the same object, F is also pointing to it. And I'm getting F dot get first. But that get first is holding an integer type value. And what I'm going to do, I'm assigning that value into the X. That is not possible. Hence, the class cast exception is thrown. So that's why if we are mentioning the types, if we mention the type here in the manipulation demo, if we mention the type here,
what it is saying. I'm defining the type here, integer, then it's given a compile time issue. Sir, type mismatch is there. तो compile time पर ही हमको ये पता चल गया there is a problem. This is type. तो हमने जेनेरिक क्लास बना, जेनेरिक क्लास किसी भी तरीके के डेटा पे काम करे. Now we switch on to the next topic. How to create a generic method. तो कुछ लोग बोलेंगे सर जेनेरिक मेथड तो इसके अंदर ही बन गया. ये देखिए सर, ये हमने टी टाइप का बनाया और ये मेथड कैसा बन गया सर, जेनेरिक. ये किसी भी टाइप के डेटा को वर्क कर रहा है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट आई एम नॉट मेकिंग माय क्लास जेनेरिक, but I want to make my method as generic. What happened then? तो देखते हैं कैसे बनेगा. तो अभी इस कोड को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ. Then what I am doing, ये हमारी क्लास जो मैनिपुलेट डेमो है, इसी के अंदर मैं एक क्लास बना, एक मेथड बनाया मैंने, पब्लिक void or not void, let's say void, and the method name is m1. If we are not making a method as a static, then that method is known as a member method. ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है. दैट इज नोन एज मेंबर. एंड इसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास कराना चाह रहा हूँ x, और इसको मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, सिंपली प्रिंट कराना चाह रहा हूँ x. बट इट इज गिविंग एन एरर. सर यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, मैं इसको टाइप से टेम्पलेट बना देता हूँ. सो आई एम राइटिंग टी हियर, then it is permissible. We can make a method as generic like this, even though we are not creating our class as generic. Check it out how it happens. I'm commenting all the previous code and using my method only. So what that means is, to use the member method, what we have to do, we have to create the object first. So what we are doing here, manipulate what type of manipulate m1, manipulate demo, sorry, not this, manipulate demo, m1 is equal to new manipulate demo. That's it. Because the manipulate demo is not a generic type, so we need not to be define any kind of at the time of creation of the object. But at the time of calling of the method, we have to pass the genericity. So what I have to do, I want to print that value. That's it. That method, what that method is going to do, it is going to print that value. So how we are going to call that object? By using m1 dot, sorry, not this is m1 also. This, so I'm going to give this name method. Yeah, or you can say that print method. Then there is no confusion. So here I'm what I am doing, m1 dot print, and I am passing some value here. Let's say 33. So what is my expected output? Whatever I am value passing the value, that should be printed. Please check it out. It prints 33. अगर जो मैं यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू भी पास करूँ, डबल वैल्यू भी पास करूँ, तो उसको भी वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा. मीन्स दैट मेथड इज जेनेरिक इन नेचर.
even though the class is not generic. I can pass any object as well. I already created a circle class, so I am passing new circle and still it is printing. Check it out. And in circle, I am passing some radius 12. Check it out. Because the circle class is not having a two string method. तो मैं अपनी सर्कल क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को बना देता हूं ताकि आपको यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल आउटपुट मिले. So what I am doing here, I am printing source generate two string. That's it. Now I am going to, if I am going to execute my code, check it out what happened. It is also printing a circle. Radius is equal to 12. So we can make a class as generic. We can make a method as generic. We can make both as generic and so on. We can pass multiple genericity here. I dot x, let's say, or v and comma v type y. And if I'm going to print that as well, can do. At that point of time, I can pass two values. One is type circle, another one is type integer. Uh, let's say Rahul string. So that method is working on any type of data. Check it out. Yes. Circle is printed and as well as Rahul is. So you can give any type, any number of genericity in your class as well as method. So the code is more readable. The code length is short by using generic. Now, moving ahead. Let us assume my manipulation class. Let us assume I want that my manipulation class only. अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कह रहे थे कि भाई मेरी एक क्लास है जो सिर्फ इंटीजर टाइप पे काम कर रही है और उसी तरीके की मुझे एक क्लास बनानी है जो फ्लोट टाइप पे है ना. तो हमने क्या किया, हमने एक जेनेरिक क्लास बना दिया. नाउ दिस क्लास इज होल्डिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. पहले वो एक ही कर रहा था, अब किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है. बट आई वांट टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. ओके, दिस मैथ, this class is used for only mathematical equations, so that we have to bound it. Now, पहले एक ही था, फिर हमने सब कुछ आने दिया, अब हम कह रहे हैं कि इसको बाउंड करें. I want that this class must have to bounded by ourselves. तो बाउंड कैसे करते हैं आइए देखते हैं. तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर से इसको कमेंट कर देता हूं और अपना पुराना कोड को ओपन कर देता हूं. तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी मैनिपुलेशन जो क्लास है वो स्ट्रिंग इस इंटीजर टाइप का डेटा भी होल्ड कर रही है और वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी होल्ड कर रही है. बट मैं क्या चाहता हूं, आई वांट टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन कि मेरी जो मैनिपुलेशन क्लास है वो सिर्फ इंटीजर, फ्लोट, डबल इस तरीके की वैल्यूज पे काम करे, स्ट्रिंग टाइप के डेटा पे वो ना काम. So the new concept comes into the picture that is known as bounded types. What is that? That is nothing but bounded types. So how we are bounding that? Let's check it out. I'm putting comment here. Now we are going to bounded types. So how we can bound? See, one thing more.
In the class hierarchy, object class is a parent class of all the classes. In the child class, there are string buffer, string builder, number class is there, and that number class is consisting integer, double, float, byte, short, and long. An object is directly inheriting the character, and bool. This is the hierarchy. So what I want that my manipulation should hold only number type. So how I can put that? By using extends number. That means what? Now this my class can accept, और इस क्लास का सिर्फ वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इंटीजर टाइप का होगा या फ्लोट जो नंबर टाइप का होगा एक्चुअली. सो देखते हैं. जैसे ही हमने यहाँ पे इसको बाउंड किया बाय यूजिंग एक्सटेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं, ये क्या बोल रहा है? इट इज गिविंग एन एरर. व्हाट एरर? कैन नॉट इनफर टाइप आर्गुमेंट्स मैनिपुलेशन. ये जो आप यहाँ पर पास कर रहे हो ना सर, वो अप्लीकेबल नहीं है मैनिपुलेशन पे. इट इज नॉट वर्किंग ऑन द string class now because my manipulation is bounded by number. If I can pass integer or float or double, it can easily be accessed. Double, and then after you have to pass the value of double. No issues there. So we are bounding our class by using extends keyword. One thing more, we can also use interface over here. Let's say I want to make the genericity as number, but that should be serializable. Serializable. So we can bound what I am telling. We can use the interfaces for the bounding, and we can use classes as well. Number, but number be always be the first. यहाँ भी सिर्फ एक क्लास को एट अ टाइम आप एक्सटेंड कर सकते हो, बाकी इंटरफेस कितने भी कर सकते हैं. बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर you can use any number of interfaces. You can bound any number. You can bound your class by any number of interfaces. Now another question. अभी मैंने एक मेथड बनाया था जो कि जेनेरिक इन नेचर था. तो इस मेथड को दोबारा से एक बार ट्रीट करते हैं. ये तो था क्लास को बाउंड करना, है ना. हमने क्लास को क्या किया? बाउंड. बट let us assume I want to pass an object. I want to pass an object.
This is a print method which is generic in nature. We can pass anything here. It can be easily printed because it is generic. If I want to bound it, I can bound it. I can write here t dot extends what number. जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा ये एरर देने लगा. क्या बोल रहा है भाई? जो पुराना एरर था, नॉट अप्लीकेबल ऑन द गिवन आर्गुमेंट्स. बिकॉज हमने इस मेथड को क्या कर दिया? बाउंड कर दिया. इस जेनेरिसिटी को क्या कर दिया? बाउंड कर दिया. तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, मैं क्या कर रहा हूं, एक मैनिपुलेशन नाम का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं. मैंने एक मैनिपुलेशन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसा कि अभी तक हम बनाते आए हैं. मैनिपुलेशन डेमो, सॉरी नॉट डेमो, मैनिपुलेशन ओनली, मैनिपुलेशन, जो कि जेनेरिक क्लास है, हमें सबको पता है. और इसका नाम मैंने रेफरेंस वेरिएबल का m1 रख दिया, जो कि किस तरीके का है? इंटीजर टाइप. इज इक्वल टू न्यू मैनिपुलेशन, दैट्स इट. और यहाँ पर मैंने राहुल पास कर, अब तो राहुल पास होगा नहीं क्योंकि वो बाउंड हो चुका है. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 22,34. और मेरे पास एक मेथड है और मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी मेथड में पास करा. ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? दिस m2 ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप मैनिपुलेशन टाइप का इंटीजर टाइप. मैनिपुलेशन क्लास का ये ऑब्जेक्ट है बट उसका टाइप क्या है? इंटीजर. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर जो मुझे कोई मेथड बनाना है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकूं तो क्या करना पड़ेगा? देन आई हैव टू क्रिएट फॉर दैट. देखते हैं हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दैट जेनेरिसिटी. तो देखते हैं. पब्लिक void, let's say I want to print generic object, print generic object. मेथड बनाया मैंने और इसमें मैं मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्ट पास कराना चाहता हूं. तो व्हाट वी हैव टू राइट, अगर जो आप किसी क्लास, किसी ऑब्जेक्ट टाइप के वैल्यू को पास कराना चाहते हो तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, उस क्लास का नाम लिखते हो कि भाई इस तरीके की वैल्यू इसमें आएगी. किस तरीके की वैल्यू सर आएगी? सर टी टाइप की. हाँ? और इसका नाम रख दिया मैंने ओ बी जे. ऑब्जेक्ट आएगा और इसको मुझे जस्ट क्या करना है? सिस आउट और ओबीजे को प्रिंट करना. अब ये टी टाइप मैंने डिफाइन नहीं किया तो मैं डिफाइन कर देता हूं टी टाइप. तो ये एरर दे रहा है. क्या एरर दे रहा है सर? बाउंड मिसमैच. बाउंड मिसमैच. तो मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं सर, टी एक्सटेंस नंबर नॉट, नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा. तो क्या करें? तो आई कैन पास, आई एम गोइंग टू कॉल दैट मेथड. तो मैनिपुलेशन टाइप का ऑब्जेक्ट तो है, होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट को होल्ड कर ले. मैनिपुलेशन टाइप के किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को होल्ड कर ले. क्योंकि ये क्लास, ये मैनिपुलेशन है, वेरी गुड. ये क्लास ही मैनिपुलेशन है, वेरी गुड. लेकिन ये आर्गुमेंट ये क्या कह रहा है कि मैनिपुलेशन टाइप के क्लास का किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट को होल्ड कर ले. देन दिस इज अ वाइल्ड कार्ड कॉन्सेप्ट. बहुत लोग ऐसा कहते हैं सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते तो होल्ड कर लेता. ये देख लेते हैं.
ऑब्जेक्ट। ये इंटीजर तो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास है बिल्कुल, लेकिन मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट, मैनिपुलेशन इंटीजर जो है वो मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास नहीं है। Hence, wildcard comes into the picture and I can pass like this. यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? I want to say that this method accepts manipulation type object, relation type object, which is any of its type. मतलब ये मैनिपुलेशन के किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेगा जो किसी भी तरीके का, दैट इज वाइल्ड कार्ड। If I'm going to call that method, how we can call that method? By using m1 object. So m1 dot print, and if I'm passing here m2 and execute it, please check it out. It can easily print that. See? So this is whole lot of about the concept of wildcard, bounded types, genericity, type safety. अगर जो हमें और भी कुछ डिस्कस करना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ। थैंक यू।